Hello बच्चों, let's read this question. AB, A2 and B2 are diatomic molecules if the bond enthalpies of A2, AB and B2 are in the ratio 1:1 is to 0.5 and enthalpy of formation of AB from A2 and B2 is minus 100 kilojoule per mole. What is the bond enthalpy of A2? And these are the following options given to us. So सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. As we can see, bond enthalpy of A2 find out करना है. So the key concept of this question is the bond enthalpy. And bond enthalpy एक bond energy है, और we can say amount of energy जो required होता है to break the molecule into its component atoms. So here we can write the same amount of energy required to break a mole of molecule into its component atoms. सो ये हमारे पास था बॉन्ड एंथैल्पी, एंड हमसे पूछा गया है बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ A2, विच मीन्स जो हमारे पास A2 होगा उसे तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू इट्स कंपोनेंट एटम, दैट विल बी दी हाफ A2, या फिर हम बोल सकते हैं 2A, और जो हमारे पास एटम होगा दैट विल बी दी A. Now let us discuss more about this. In this question they have given us the bond enthalpy of A2, AB and B2 which are in the ratio 1:1:0.5. So let us write the same first. जो हमें given है that is the bond enthalpies of A2, AB, here AB, B2. So जो ratio given है that is the 1:1:0.5. And apart from this they have given us the enthalpy of formation of AB, और जो हमारे पास enthalpy of formation होता है that is the change in the energy required to form the 1 mole of the substance. So सबसे पहले हम reaction लिखेंगे for that. Half of A2 plus half of B2 leads to the formation of the AB. So ये हमारे पास reaction रहेगा जिसके लिए the enthalpy of formation is given as minus 100 kilojoule per mole is given in the question. Now if we have to find the enthalpies for the or bond enthalpy for the A2, so here we can see ये हमारे पास reaction के according क्या होगा, that will be the half of the bond enthalpy for the A2 plus half of the bond enthalpy of the B2, that leads to the formation of the AB, which means bond enthalpy of the AB. So now let us consider the formula for the bond energy. So जो हमारे पास bond energy के लिए formula रहता है that will be equal to the sum of all the bonds broken. So here we can write summation sign, and ये हमारे पास जो bond enthalpy होगी H represents the bond enthalpy for the bonds broken minus sum of enthalpy for the bonds formed. So in this we can see bonds जो broke होंगे that will be of the A2 and B2, and जो bond form होंगे that will be between the A and B, that is the product we are getting. So bond energy जो हमें reaction के लिए given है that is the minus 100 kilojoule per mole. And now let the enthalpies जो हमें given है bond enthalpy of A2, AB and B2 ratio में है. So अगर हम let कर लेते हैं A2 के लिए enthalpy is X. So जो हमारे पास AB होगा उसके लिए भी enthalpy क्या हो जाएगा X, एंड जो हमारे पास B2 होगा उसके लिए enthalpy will be 0.5x हो जाएगा, एंड 0.5x को हम लिख सकते हैं 1/2x, hence it is x by 2. So here we will write as x by 2 for the B2. Now bonds break हुए हैं for the A2 and B2. So जो हमारे पास enthalpy है that will be half of the enthalpy of A2. So x by 2
plus and half of the enthalpy of B2. So enthalpy is x by 2 and half करना है इसका, so it will be हमारे पास हो जाएगा x by 4 एंड माइनस करेंगे जो हमारे पास बॉन्ड फॉर्म में हुए हैं, दैट इज ए बी. सो एंथैल्पी है हमारे पास ए बी के लिए, दैट इज द एक्स. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस. सो माइनस का 100 विल बी इक्वल टू द एक्स बाय 2 प्लस एक्स बाय 4 है एंड माइनस एक्स है. सो एलसीएम लेंगे हम. फॉर दिस द एलसीएम विल बी 4. सो इट विल बी हियर 2x plus x and minus 4x and यहाँ पे था हमारे पास माइनस का 100. so 2x plus x is 3x. so ये आ गया हमारे पास 3x minus 4x divided by 4. so plus 3x है minus 4x है, so plus minus minus हो जाएगा, but 4x बड़ा है तो minus का साइन रहेगा, so it will be minus of x by 4. सो ये हमारे पास आया -100 इज इक्वल्स टू दी माइनस एक्स बाय 4. सो माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया, 4 मल्टीप्लीकेशन में गया 100 से, सो x विल बी इक्वल्स टू दी 400 एंड इट वाज इन किलो जूल पर मोल. सो किलो जूल पर मोल. सो ये हमारे पास बॉन्ड एंथैल्पी आ गई जिसे हमने x लेट किया था फॉर A2 and it is asked for the bond enthalpy of A2 only. So the answer of this question will be option A, that is 400 kilojoule per mole. Let us mark the option A as the final answer of this question. B, C and D are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.